guys, and welcome to VARC series by For All Prep. So today we are going to take a look at an editorial that appeared in the Wall Street Journal newspaper. This is opinion based, but we will learn how to read and comprehend it. So take a look at the first paragraph. Here it is written that the thing self-help book tends not to tell you the thing they brush aside because their authors have to. Sell books is that we usually don't get to choose when and where to learn a life lesson. Most times it is unexpected that hits us on the nose. So इसमें बता रहा है कि मतलब सेल्फ हेल्प बुक्स क्या नहीं करती हैं और क्यों नहीं करती है बता रहा है। तो ये इससे हम कंप्लेंट कर सकते हैं और ये बता रहा है कि जो लाइफ लेसन्स हैं वो अनएक्सपेक्टेडली हिट कर जाती है कभी भी। ऐसा नहीं होता कि हम प्लान करके लर्न कर सकते हैं लाइफ लेसन से। सो सेकंड पैराग्राफ। So it is that I gained life lessons from a kitchen knife. अब ऑथर बोल रहा कि उसने नाइफ से कैसे लाइफ लेसन्स लर्न किए इन सेकंड पैराग्राफ। सो अब 1 पाउंड 8.6 इंच कार्बन स्टील चाइनीज क्लीवर। अब क्लीवर जो यहाँ पे आया, तो क्लीवर इज अ लार्ज नाइफ। नाइफ लार्ज है बट देन इट हैज अ रेक्टेंगुलर ब्लेड। आप शेफ के पास ये लो देख पाओगे। Cleaver that I picked on a whim in a lower Manhattan. Its rosewood handle and rectangle blade have transformed the way I cook and even the way I live. तो लाइव लेसन्स बता रहा है कि कैसे उसने परचेज किया एंड उससे क्या उसको सीखने को मिला। नेक्स्ट पैराग्राफ। Carbon steel gives a sharper edge than stainless steel, and it is easier to sharpen, but the blades rest easily. So I had to figure out clumsily. अब clumsily शब्द आया है, that means that in a careless or awkward careless way. So next it is written that so I had to figure out clumsily how to maintain the life. I learned to force a patina, a controlled oxidation to protect the blade with vinegar. I learned that oiling the blades prevents humidity from tarnishing the steel. I learned that leaving the knife wet it corrodes it. So बोल रहा है कि नाइफ को अगर हम पानी उस पे है वो छोड़ देंगे तो कोरोड हो जाएगी। और कैसे उसने सीखा कि कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन को कैसे वो कंट्रोल कर सकता है ब्लेड पे विद विनेगर। यहाँ पे लर्निंग उसको मिली। नेक्स्ट बोला कि आई बॉट अ चाइनीज क्लीवर ऑन अ विम एंड इट टॉट मी अ लॉट। On a whim means like spontaneously without thinking a lot of or putting a lot of thought into it. Next, it is written that next was understanding how to use the heavy thing, how to grasp it, how to cut with it, how to use it as a bench scraper. This kind of knife was clunky and awkward. I had to develop a feel for how to grip the blade, pinched between my thumbs and index finger, just above the handle for control. उसको होल्डिंग कैसे 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 करते हैं, कैसे उसे स्क्रैप कर सकते हैं, हाउ टू यूज इट, हाउ टू कट विद इट, ही लर्न ऑल दैट। सो नेक्स्ट लिखा है विद प्रैक्टिस आई लर्न टू यूज द फ्रंट हैवी ब्लेड efficiently using gravity, force and momentum to slice dice and chop with less effort. I come to love the satisfying thunk of a cleaver hitting the cutting board. Its broad surface allowed me to smash garlic and ginger and let me transfer chopped food quickly from the cutting board to a pot. So, ने बता रखा है कि how this big large knife is helpful in cutting because it has gravity, a force and momentum to chop the foods, slice the foods with very less effort. फिर से बता रखा है कि learning all this, ये पैराग्राफ थोड़ा important है कि
मेन समरी समराइज करेगा अभी तक का क्या लर्न हुआ है कि लर्निंग ऑल दिस meant I had to use the blade as it was intended to be used with certain foods and not others, which led to a more thought out dishes and meals. I bought a wooden cutting boards because I read that they were better for the blade. I bought special oils to season it. My knife also becomes something of a conversation piece. Huh. Friends I cooked for wanted to try it, drawing it from its homemade cover, crafted from the old shoe boxes. अब वो कैसे बता रहा है कि उसने कैसे चलाना सीखा, कैसे किन फूड्स पे वो ज़्यादा अच्छा चलता था, और कैसे उसने थॉट किया कि ये डिशेस के लिए ज़्यादा बेहतर है, और कैसे वो प्लास्टिक और स्टील बोर्ड से शिफ्ट कर गया वुडन बोर्ड पे, क्योंकि उसका नाइफ वहाँ पे बड़ा चलता था, लॉन्ग लास्टिंग था। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा कि what I learned along the way was to treat things with more care. If I want to continue with my using my knife, I have to maintain it. The blade will rust if I leave it in the sink. I have to cut vegetables with the proper form or risk getting cut or worse, ruining dinner. I have to be responsible with my ingredients and time. तो कैसे वो बता रहा है कि through life he learned how to be more, we can see, handle something with more care, more caring attitude बता रहा है, and कैसे how to use it, how to treat things with more care ये हो चुका है, और कैसे अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हैंडल करेगा ठीक से तो कैसे उसकी ब्लेड खराब हो सकती है, जो इंग्रेडिएंट्स वो डिशेस में डाल रहा है वो कैसे खराब हो सकते हैं, एंड टाइम, एंड ऑफ कोर्स टाइम कैसे उसका रूल हो सकता है। नेक्स्ट ये देख रहे हैं, I am far from being a profession. He's not a professional. He just bought it and learned how to use it. I've slathered the blade with too much oil. A slathered जो word है, slathered means like substance, putting some substance, putting substance that is thick. तो वही उसने बता रखा है, I've slathered the blade with too much oil, मतलब उसे काफी ज्यादा ऑयल पुट कर दिया है. I have taken too long to dry it off, and the edges is overdue for sharpening. But using my cleaver has taught me a little more patience. अब उसने और क्या सीखा है, पेशेंस है, and a bit more competence, मतलब how to become eventually good at something. That's more of a life lesson than I thought I would receive and impart it. अब एक नाइफ पीस से कैसे उसने इतनी सारी लर्निंग सीखी वो इस आर्टिकल में बताया गया है. So face bottom, he's an assistant editorial assistant, and this editorial featured at the journal, the Wall Street Journal article. So I hope you enjoyed it. I hope you learned something from it. So this kind of philosophical news articles or opinion-based articles or editorials sometimes come into the cat paper. सो अगर आप धीमे धीमे कंप्लेंट करते जाओगे कि इससे सीख रहे हैं इससे ये सीख रहे हैं, so you can basically relate the whole story, and when you once you create a mind map of the overall summary, answering the questions will become very easy for you. So we will come again with a new article on a diverse topic. So thank you for watching. Subscribe to our channel